So I would ask you one last time. I hope the board is visible to all of you. My voice is loud and clear. The Yes, sir. topic of discussion at hand is amino acid. Now, amino acids, which basically are the building blocks of protein. By peptide bonds, you'll have peptides which will, form polypeptides, which would eventually form protein. The term protein comes from the Greek word proteus. So, I have to begin with a few informations which are there in NCRT. I hope you all can hear me loud and clear. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ, Proteus means primary or of prime importance. So protein happen to be the most important and the most abundant. You say these are like the most abundant biomolecules in the living world. The word proteus means primary or of primary importance. Naturally, proteins are the most versatile biomolecules in the sense hair, muscle, enzymes, hormones, hemoglobin is a protein, enzymes are proteins, and all the natural protein, which is by the various permutation combinations of the peptide bond formation of amino acids, all natural protein is supposed to have come from what's called alpha amino acid. Now, right away, the term amino acid would mean it contains a COOH group and a amine. So amino acid means it's containing an amino group and an acidic group. Alpha amino acid means, see if I draw an acid, carbon next to it is alpha carbon, NH2 here, this is an alpha amino acid. I could have very well drawn a beta amino acid, but as I said, all natural protein is going to come from alpha amino acid. I hope you are being able to hear me. All natural protein will come from alpha amino acid. And this alpha amino acid, which means there is an amino group and an acidic group. Amino is alpha with respect to the COH group. So it's generally represented in a manner where, say this is an alkyl group, the smallest amino acid will have just one carbon. The smallest amino acid will have just one carbon. So in that case, this will be hydrogens. And I hope you're understanding me. If this is how I represent an alpha amino acid, for the smallest one, this will be hydrogen, it will be called glycine. The word glycine comes from glycose, meaning sweet, like glucose, sweet sugar. And the second smallest amino acid would be alanine, where this will be CH3. But chalo khana bolo. We are used to writing the functional group vertically up. And then with this R here, this hydrogen here, if this NH2 is to the right, I'll call it a capital D amino acid, like I used to call the capital D sugar with COH kept vertically up and OH on the right. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. Or it could be NH2 to the left, keeping COOH vertically up, and well, these are two enantiomers considering this is chiral, with the exception of glycine,
Because in glycine this will be hydrogen. A single carbon amino acid is glycine. Otherwise, if it's methyl, it's lysine, it's alanine. इसको कैपिटल डी बोलेंगे और इसको कैपिटल एल बोलेंगे. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. तो ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है. नेचुरली यहाँ पर दिखता है अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, आर है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है. अगर ये भी हाइड्रोजन रहेगा, ये भी हाइड्रोजन रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, वरना all alpha amino acids will be optically active with the exception of CH2 NH2COOH. You know, there is a smallest amino acid. This is glycine. With the exception of glycine, which is having two hydrogen and thus this is a chiral, all alpha amino acids will be chiral, and the crystal projection would be written in this form or its mirror image form. Let me call this capital D and capital L. You have an understanding of this from our discussions on carbohydrates. COH functional group keeping vertically up. To the right is capital D, to the left is capital L. Two things. All natural protein is going to come from alpha amino acids, and almost all the alpha amino acids are going to be of this capital L form. So the capital L form would mean drawing the special projection, keeping COH up, we'll have NH2 to the left, and we'll want to move on. You could have an alpha amino acid, you could have a beta amino acid. Yes or no? You could have a gamma amino acid. But two things. All natural protein, which happens to be the most abundant biomolecules, they come from alpha amino acids, and these alpha amino acids, with the exception of glycine, you see four different drugs which is not hydrogen. And this chiral carbon having two fission projections which are like mirror images of each other. Capital L amino acid is the principal form, which is the most common form of the alpha amino acid, which will constitute or form all natural protein in the living world. We'll want to move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. So alpha amino acid or capital L amino acid is about the configuration of this amino acid around a chiral carbon or in the chain of amino acid. The other method by which you classify an amino acid, other than the position being alpha and the configuration being L, is amino acid could be what's called essential amino acid or non-essential amino acid. In NCRT, the number of amino acids which I saw forming natural protein, the count is given to be 20. You know, a biology student would know better whether it's 20 or 22 or some other number. I don't exactly know. 20 sir, 20. 20 है सर. Yes, which is good to know. Which is good to know. Out of which essential amino acids are those which are not formed in body, which are not formed in human body. Naturally, because they are not formed in human body, they need to be procured from outside. Required in diet. Yes, it's required in diet. You have to kind of eat it. You have to, put it in your body. And I think the count which is given in NCRT again is 10. A student of biology would know it better. Yes sir. Essential amino acid is something which is not formed in human body, has to be procured by eating. Non-essential naturally is the one which is formed by a human body. Another method of classifying amino acid is, we call it neutral amino acid, acidic amino acid, or basic amino acid. Please go ahead and tell me, when do you call an amino acid a neutral amino acid?
When do you call it a neutral amino acid? If the number of amino acids and the carboxylic acid group is same. Obviously, when COH and NH2 are equal in number, so it will be neutral. And now you would want to know that if it's acidic, it's only because the number of COH is more than the number of NH2, and basic certainly because the number of COH is less than the number of NH2. So there's another mode of classifying amino acids. I repeat, alpha amino acid or capital L amino acid, depending upon its configuration, essential or non-essential, it's absolute biology here. And then neutral acidic basic again. Neutral because COH is acidic in nature, NH2 is basic in nature. You call it neutral if the count is equal. Acidic if COH is more than NH2, and basic if NH2 is more than COH. We'll want to move on. I hope you're all copying it down. बच्चे लोग हाँ बोलो. हाँ सर. Let's talk about some basic physical properties of amino acids, which right away is going to indicate some extremely significant facts about the nature of this molecule having a COH group and NH2 group in the same compound. Amino acids are going to be crystalline solids. They're going to be crystalline solids with high boiling point, melting point. They're going to be soluble in a polar solvent. I know the most polar solvent, the most common polar solvent, the universal solvent, Water. it's a water. Now, this is not surprising. This is not surprising. Given the fact it has so many COOH and NH2, COH, NH2, they're capable of hydrogen bonding. And in a molecule like amino acid, like carbohydrates, where you had so many OH groups, COH, NH2 both being capable of hydrogen bonding. I tell you this from the days of class 11 chemical bonding. Any organic compound will dissolve in a polar non-inorganic or inorganic solvent only if it can form a hydrogen bond. So they being soluble in a polar solvent like water, it's not surprising because it can form hydrogen bonding with water. But organic है ना, तो organic में भी dissolve करना चाहिए. Organic है तो organic में भी dissolve करना चाहिए. Alcohol dissolves in water because of hydrogen bonding. But alcohol also dissolves in organic solvent because that is its primary trait. Like dissolves like is the basic fundamental trait of solubility. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा. वो इनऑर्गेनिक में तभी डिसॉल्व करेगा अगर वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी सरप्राइजिंग. ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है बट इट्स ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन organic solvent. Now this is going to draw some, or this is going to raise some eyebrows. यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहिए. आई रिपीट, एन अल्कोहल विल डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो भी अगर साइज बड़ा हो जाता तो हायर अल्कोहल्स विल फेल टू डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज द हाइड्रोफोबिक एंड विल बी बिगर देन द हाइड्रोफिलिक एंड. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग is going to help only small members. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करेगा अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना तो उसका धर्म है. Which comes from the principle of like dissolves like. Yes or no? Yes sir. Yes sir. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है. तो इसके लिए ना मेरे को कुछ ना कुछ और समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा. अब मेरे एक बात बहुत ध्यान से सुनो. अगर मैं ना ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं एक अल्फा अमीनो एसिड को, प्लीज हियर मी आउट.
I think you are understanding me. This is the general representation of an alpha amino acid. Alpha position पर NH2 है, chiral है. Please hear me out. ये जो representation है alpha amino acid का, ये जो representation है alpha amino acid का, it's only theoretical, it's only symbolic. अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कभी रहता ही नहीं है. बच्चे लोग मेरा बात समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, एलानिन का फॉर्मूला लिखते हैं CH3CH NH2COH. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर। हाँ ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ग्लाइसिन का, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं एलानिन का, ये खाली सिंबॉलिक है. अमाइनो एसिड कभी इस फॉर्म में रहता ही नहीं है. अमाइनो एसिड कभी इस फॉर्म में रहता ही नहीं है. कैन यू टेल मी व्हाई? दिस इज ओनली सिंबॉलिक. Zwitter ion form. Zwitter ion is something which I have come to, but before that, ये जो दो फॉर्म है ना, NH2 और COH, ये दोनों ग्रुप बिल्कुल एंटेगोनिस्टिक है. ये एसिडिक ग्रुप है और ये एक बेसिक ग्रुप है. ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये एक बेसिक ग्रुप है. इन द एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स, a COOH will lose H+2 NH2. एक बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में कोएग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब ही है कि अगर मीडियम बहुत एसिडिक है, अगर मान लो मीडियम बहुत एसिडिक है, इतना एसिडिक है, इतना एसिडिक है कि ये बेचारा अपना H+ छोड़ नहीं पाता है. मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना. प्लीज हियर मी आउट. यू वांट टू यू नो you want to hear me out and pay a lot of focus on my language. अगर मीडियम इतना एसिडिक है, if the medium is so acidic, अगर मीडियम इतना एसिडिक है कि ये H+ नहीं छोड़ पा रहा है, ये तो H+ छोड़ता है, COH का काम है H+ छोड़ना. अगर मीडियम इतना एसिडिक है कि ये H+ नहीं छोड़ पाता है, if the medium is too acidic कि ये COOH बन के रहेगा, तो इतना एसिडिक कंडीशन में ना वो जरूर H+ ले लेगा. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर। हाँ सर. ये फॉर्म सिंबॉलिक क्यों है? मैं क्यों बोलता हूँ ये फॉर्म खाली सिंबॉलिक है? ये खाली फॉर्मूला लिखने के लिए अल्फा अमाइनो एसिड का. अमाइनो एसिड ऐसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट करने के लिए इसको H+ नहीं छोड़ना है, और ये H+ सभी नहीं छोड़ेगा जब मीडियम बहुत एसिडिक रहेगा, और जब मीडियम बहुत एसिडिक रहेगा तो ये H+ ले लेगा. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ हाँ सर. और अगर ये H+ छोड़ता है, अगर ये H+ छोड़ता है, in a medium which is either too alkaline or alkaline, तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसे एक इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसे एक इक्विलिब्रियम आएगा जहां पर ये तीन फॉर्म का हम लोग बात करेंगे, फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर। जहां पर वो या तो कैटायनिक फॉर्म में रहेगा या तो एनायनिक फॉर्म में रहेगा. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. I hope you all are understanding me. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes sir. Yes, sir. Now let me tell you what exactly happens.
आई कैन रब इट ऑफ। Yes, sir. ये वाला फॉर्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुमको पता है ये वाला फॉर्म कभी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि नहीं होता अगर मीडियम बहुत एसिडिक है और ये H प्लस नहीं छोड़ रहा है, अगर मीडियम बहुत एसिडिक है और ये H प्लस नहीं छोड़ रहा है, तो वो H प्लस ले लेगा। ठीक है? हाँ सर। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ये इक्विलिब्रियम में क्या है? यू वांट टू डू दिस by adding OH minus so that it can lose H plus. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, Now, sir. when it has to lose H plus, when it has to lose H plus, when it has to lose H plus, still this is more acidic. So it will lose H plus in this form. This will lose H plus. Yes, sir. हाँ sir. Yes. If you add more alkali, if you add more alkali, if you add more alkali, then this will lose H plus. See, initially I had to give you a form like this because this is how the formula of amino acid is supposed to be. मैंने पहले ऐसा लिखा था because this is how you want to see an amino acid. This is the general formula of an amino acid. Alanine बोलो, glycine बोलो, फिर हाना नहीं बोलते हो। हाँ सर। ये कभी रहता ही नहीं है, ये कभी रहता ही नहीं है। कैसे रहेगा बताओ? अगर मीडियम बहुत एसिडिक है कि ये H प्लस नहीं छोड़ रहा है तो ये H प्लस ले लेगा। तो बेसिक है ना, ये H प्लस कब नहीं छोड़ेगा? अगर मीडियम बहुत एसिडिक है, बहुत एसिडिक मीडियम में बोलता हूँ pH 0 है, तो दिस विल बी द प्रीडोमिनेंट फॉर्म। जिस कंडीशन में ये H प्लस नहीं लेगा, ये डेफिनेटली H प्लस ले लेगा, तो दिस विल बी द कैटायनिक फॉर्म। हाँ सर। अब इफ आई बिलीव कि ये H प्लस छोड़ता है तो इन दोनों में पहले तो ये छोड़ेगा ना। Yes, sir. So if this is representing Ka1, this loses H plus, and if this represents Ka2, then this loses H plus. मैं पहले ये फॉर्म लिखा था बिकॉज ये सिंबॉलिक फॉर्म तुमको पता है, अल्फा अमीनो एसिड जैसे हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, पर ये जो फॉर्मूला में लिखते हैं ये फॉर्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना तो बहुत एसिडिक कंडीशन पे, ना तो बहुत एल्कलाइन कंडीशन में, ना तो इंटरमीडिएट कंडीशन पे। किसी भी मीडियम में बहुत एसिडिक कंडीशन में या तो कैटायनिक होगा, बहुत एल्कलाइन मीडियम में या तो एनायनिक होगा। और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अगर न्यूट्रल भी होगा तो ऐसा होगा, अगर ये न्यूट्रल भी होगा तो इट विल नॉट बी फ्री ऑफ चार्जेस, नॉट फ्री ऑफ चार्ज। अगर न्यूट्रल भी होगा तो मैं पहले ये लिखा था, मिटा के ये लिख दिया, मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर न्यूट्रल भी है तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि डज नॉट हैव अ चार्ज, इवन इन द न्यूट्रल फॉर्म इट्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ sir. तो ये किसी भी फॉर्म में बिना चार्ज के हुआ क्या? नहीं। नहीं sir. ये कभी भी ऐसा था क्या? नहीं सर। नहीं sir. हमेशा चार्ज था। तो जब चार्ज था तब तो पोलर में डिवेलप करेगा ना, ऑर्गेनिक में डिवेलप नहीं करेगा। क्या बोलते हो? सर सेकंड फॉर्म में NH3 प्लस से मतलब प्रोटॉन सेकंड फॉर्म ट्रांसफर क्यों स्टेबल नहीं हो होता है जाता है? इसीलिए। NH3 प्लस से प्रोटॉन, प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं हो जाता है CO माइनस के उधर? अगर तू NH3 प्लस से प्रोटॉन ट्रांसफर करके COO में दे देगा, इसका मतलब होगा कि एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा फॉर्म है जिसमें कि एसिड H प्लस नहीं छोड़ रहा है, और ऐसा फॉर्म जहां पर एसिड H प्लस नहीं छोड़ रहा है उस फॉर्म में तो ये जरूर H प्लस लेके रखेगा ना। हाँ सर। मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये ना खाली सिंबॉलिक फॉर्मूला है।
अमाइनो एसिड तो भी ऐसा रहता ही नहीं है। हो सकता है इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, फॉर्मूला सेम हो, बट न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि दोनों चार्ज बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब ये वाला जो फॉर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन। यू अंडरस्टैंडिंग मी? Yes, sir. अब कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेंट होगा ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल मीडियम पे, ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल पीएच पर। मैं पीएच 0 ले लेता हूं अज्यूमिंग वेरी एसिडिक कंडीशन, मैं पीएच 14 ले लेता हूं अज्यूमिंग वेरी अल्कलाइन कंडीशंस। बट इवन एट इंटरमीडिएट फॉर्म when you get a dipolar neutral form, it's not free of charges. The neutral form is also, bearing equal and opposite charge. That is why any form of amino acid at any pH is having polar character. So it's soluble in polar medium only. It's never soluble in or almost insoluble in Organic. non-polar organisms. Organic. बात समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ सर. हाँ सर. अब अगर मान लो I choose a real example, which is say alanine, and I think you're understanding Ka1, Ka2. This is losing H plus. This is losing H plus on adding OH minus. Either I add OH minus or I add anything which is leading to the medium getting less acidic, more alkaline, so that this can lose H plus. So this will lose H plus first. From R, I move to the cationic, anionic, and the deuterium form of, well, the second smallest amino acid, which is alanine, and this is 1, this is 2, and this is 3. Let's crunch some numbers. It's not like you have to mug it up. If this is Ka1, if this is Ka1, let me tell you, the value of pKa1 is 2.5. If this is Ka2, let me tell you, the value of pKa2 is say around 9.5. Right away, you remember CH3COOH? You know, we're very particular about the value of Ka being 1.8 into 10 to the power minus 5. And for this equilibrium, I end up telling you in class 11 that the value of pKa would be 5 minus log 1.8, which will be almost 4.74. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So between acetic acid and alanine, it's a value which I make you recall. 9 out of 10 times JEE में यही value आता है. pK of acetic acid is 4.74, 4.7. अब pK ज्यादा है मतलब Ka कम है. You compare these two, अमाइनो एसिड का Ka कम है, pK कम है मतलब Ka ज्यादा है. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. मतलब वो एसिडिक ज्यादा है. एनी डे एसिडिक ज्यादा होगा मतलब Ka ज्यादा होगा मतलब pK कम होगा. कम होगा. So between these two, alanine and acetic acid, which is more acidic? Come on. Which is more acidic between alanine and acetic acid? बंदर लोग. एलेनिन. Alanine, sir. Alanine, sir. So amino acid is more acidic than acid. You understand this? Amino acid is more acidic than acid. अरे बाबा NH3 प्लस का स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, NH3 का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है. तो ये हटा के हाइड्रोजन कर दे. ये दोनों तो 2 कार्बन का ही है, दोनों 2 कार्बन का ही है. द टू आर रिलेटेबल, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये NH3 प्लस का ही है,
हाँ You सर need to respond to me. So between amino acid and carboxylic acid having same number of carbon atom, amino acid will be more acidic. Amino acid will be more acidic. I can obviously give you the reason because NH3 plus will have a very strong minus I effect. Are you all there with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope you're noting it down. I hope you're noting it down. yes Now let's play around with some mathematical formulae which you have learned in ionic equilibrium. बच्चे लोग अगर मान लो मैं इसको 1, 2 और 3 लिखूं, माइनस एच प्लस की जगह मैं लिख सकता हूं 1 इज बिकमिंग 2 प्लस एच प्लस एंड 2 इज बिकमिंग 3 प्लस एच प्लस. Yes or no? Yes, sir. Now what is Ka1? What is Ka1? Ka1 is H plus 2 by 1. Am I being understood? yes sir Ka1 is product by reactant. So instead of writing these big molecules, I would write H plus 2 and 1. Yes or no? yes sir Yes, sir. Yes, sir. So can I say at pH is equal to pKa1, at pH is equal to pKa1, or I would rather want to derive a few things. Generally in class 11, I equate you till this point. You will want to do some cross multiplication, minus log on both sides. इसी को हम लोग ना थोड़ा सा सजा लेंगे. मैं एक बार कर ही देता हूँ. H plus is equal to Ka1 into 1 by 2. You take minus log on both sides. Minus log of H plus is equal to minus log of Ka1 minus log of 1 by 2. और यहीं से तो मेरा हेंडरसन इक्वेशन आता है. हेंडरसन इक्वेशन क्या आता है? हेंडरसन इक्वेशन आता है माइनस लॉग ऑफ H plus is pH. I get pH is equal to माइनस लॉग ऑफ K1 is pK1. ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूं. लॉग ऑफ 2 by 1. Yes or no? This is my Henderson Hasselbalch equation. yes sir I think you're all understanding me. Yes, sir. yes If there is a doubt, please ask me. ये ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट और उसका कैलकुलेशन ये सबके लिए बहुत जरूरी है that we revisit these ideas. So far so good, I believe. You are happy with this? yes sir अच्छा 1 2 3 में मैं बोला था pH is equal to 0 में ये प्रीडोमिनेंट फॉर्म है और pH is equal to 14 में ये प्रीडोमिनेंट फॉर्म है. You are again happy with this? By default the medium is water, pH plus pH is 14. किसी भी फॉर्म में कभी भी ये न्यूट्रल बिना चार्ज के नहीं होता है. I can remove this clutter. yes sir Yes, sir. छोटा चीजें बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनो. If you believe in pH is equal to pK1 plus log of 2 by 1, if you believe in pH is equal to pKa1 plus log of 2 by 1, you also got to believe at pH is equal to pKa1, which is a 2.5, 1 is equal to 2. हाँ, sir. pH is equal to pK1 2.5, 1 is equal to 2, 1 is equal to 2. दोनों बराबर है. 50% of the molecules have lost H plus.
50% of 1 lost H plus to become equal amount of 2. Yes or no? तो चलो खाना बोलो. हाँ सर. And naturally at pH less than pKa1, which is say from a value 0 to 2.5, 1 is more than 2. Yes, sir. And at a value pH more than pKa1, you'll have 2 more than 1. ये कॉमन सेंस भी है भाई. जितना मीडियम अल्कलाइन होगा, जितना पीएच ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा. जितना मीडियम एसिडिक होगा, ये ज्यादा होगा. एसिडिक मीडियम में कॉमन इफेक्ट होगा, इट विल कम बैक. अल्कलाइन मीडियम में आगे बढ़ेगा. एट पीएच 0 दिस विल बी प्रीडोमिनेंट फॉर्म. एट पीएच 2.5 दोनों बराबर रहेगा. 2.5 से कम में ये ज्यादा रहेगा, वो कम रहेगा. 2.5 से ज्यादा में वो ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा. यस और नो? ये सब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन में तुमको हेल्प करेगा. आई होप यू नोटिंग इट डाउन. Yes sir. Can I remove this clutter? Yes, sir. Please hear me out. Like I did for pKa1 or Ka1, I could write Ka2 as H plus 2 by 3. Oh God, 3 by 2. हाँ सर. What is Ka2? Product by reactant H plus 3 by 2. And with the same calculations, I'll get pH is equal to pKa2 plus log of. तो चलो Two by खाना three बोलो. होगा. हाँ, इतना कॉपी करो, इतना समझो. विल रिज्यूम इन 2 to 3 minutes. Will resume in a couple of minutes. Will resume in a few minutes. इतना कॉपी करके रखो. If I've done a mistake, please tell me. Will resume in 2 to 3 minutes. अरे हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर.
See, somebody has tested me when the pH is 2.5, which structure would be predominant? When the pH is 2.5, 1 and 2 will be equal, 3 will be negligible. There's someone called Dheeraj. Dheeraj, can you hear me? Yes, sir. But it's simple as it looks. I mean, this is not complicated. आने की कुल भी बहुत मजेदार चीज है अगर तुमको प्रॉपरली पढ़ाया जाए तो। ये बफर है, अभी मैं थोड़ा देर में बताऊंगा ये बफर है, कैसा है बफर मैं तुमको बताता हूँ। जहां पर एक वीक एसिड है एंड यू हैव इट सॉल्ट, so if you are happy with this, you know, pH 0, 1 is predominant, pH 2.5, ये दोनों बराबर है, 0 से 2.5 के बीच में ये उससे ज्यादा है, 1 2 से ज्यादा है, pH 2.5 से ज्यादा, 2 1 से ज्यादा है। कब तक? जब तक ये इक्विलिब्रियम चालू नहीं होता। जब ये इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा 9.5 पे, ये दोनों बराबर है, 9.5 से कम में ये उससे ज्यादा है, 9.5 से ज्यादा में C2 से ज्यादा है। I mean, this is as simple as it looks. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। अब मैं तुमको बताता हूं, एक ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, जिसको ग्राफ समझ में आता है ना, वो तो सब कुछ समझ सकता है। चलिए रब इट ऑफ। Yes, sir. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, जहां पे तुम जब एम्फीप्लॉटिक स्पीसीज पढ़ते हो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब देखते हो, अमाइनो एसिड्स हो या आयनिक इक्विलिब्रियम हो, तुमको दो इक्विलिब्रियम दिखता है। अगर एक डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड कौन सा है? H2CO3 है, H2CO3 है, ये H प्लस देता है और HCO3 माइनस देता है। यहाँ पर Ka1 है, मैं इसको 2 बोलता हूं, मैं इसको 1 बोलता हूं। फिर HCO3 माइनस है, वो H प्लस और CO3 2 माइनस देता है, मैं इसको Ka2 बोलता हूं, मैं इसको 3 बोलता हूं और मैं इसको 2 बोलता हूं। कैन यू ड्रॉ दी पैरेलल? मतलब ये भी तो ऐसा ही है ना कि H2CO3 से H प्लस और HCO3 माइनस आया और यहां से H प्लस और CO3 2 माइनस आया। यस और नो? K1 K2 का वैल्यू दे देगा, PK1 PK2 का वैल्यू दे देगा, यू नो इट वुड बी अगेन एट द सेम स्टेशन। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। इसको इसको बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व हमेशा ड्रॉ करते हैं व्हेन पीएच इज प्लॉटेड वर्सेस इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस। देखो जब OH माइनस डालोगे ना तो पीएच बढ़ेगा, OH माइनस डालने से पीएच बढ़ता है। टाइट्रेशन कर्व इज ऑलवेज pH versus OH minus added because you always want to draw a plot moving up. You know, a graph moving up is always good to see. Yes or no? Yes, sir. अब मैं टाइट्रेशन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये अमाइनो एसिड का है कि कार्बोनिक एसिड का है, आई डोंट नो, और रादर बोथ आर इक्विवेलेंट। कैन वी मूव ऑन? Yes, sir. सपोज these are the three forms. एक क्वेश्चन आता जेई में कि अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो, on adding carbon dioxide to water or dissolving carbon dioxide to water, क्या क्या मिलेगा पानी में? कार्बोनेट मिलेगा, बाइकार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनिक एसिड मिलेगा, या चारों मिलेगा? आंसर बस चारों मिलेगा, बिकॉज जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डाला तो कार्बोनिक एसिड बना। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि किसी पीएच पे ये ज्यादा होगा, किसी पीएच पे ये ज्यादा होगा, और किस पीएच पर ये दोनों बराबर होगा वो मेरे को पता है, वो है पीएच इज इक्वल टू PK1।
किस पीएच पी दोनों बराबर होगा मेरे को पता है, दैट इज पीएच इज इक्वल टू pKa2. यस या नो? बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes. हाँ Yes, sir. सर. और ये ग्राफ कैसा होगा, ये प्लॉट कैसा होगा? तुम जैसे ही एक वीक एसिड में एक ड्रॉप OH माइनस का डालते हो, द मोमेंट यू add a drop of OH minus to carbonic acid, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, सोल्यूशन तो इसका है. यू आर प्लॉटिंग विद OH माइनस एडेड. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ जो सर. OH माइनस डालोगे, जो OH माइनस डालोगे वो इसको कन्वर्ट करेगा बाइकार्बोनेट में. सो जैसे ही एक ड्रॉप OH माइनस डालते हो, you activate this equilibrium, and when you activate this equilibrium, it's going to be a buffer, which is the buffer of a weak acid and its salt. Yes, sir. You know, the buffer is the best when these two are equal. Do you know this? क्वेश्चन जब करोगे ना आयनिक में, तो तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पे सॉल्ट और एसिड बराबर देगा. ये तुम लोग ना, मैं आयनिक में और बताऊंगा ये. जब सॉल्ट और एसिड बराबर होता है ना, जब सॉल्ट और एसिड बराबर होता है, when salt and acid are equal, then the buffer capacity is maximum. The buffer capacity is maximum. मैक्सिमम जी का प्रॉब्लम में देखना, दोनों बराबर देगा. तुमको लगता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए दे रहा है, बट व्हेन सॉल्ट एंड एसिड आर इक्वल, दिस इज अगेन द केस ऑफ pH इज इक्वल टू pKa1 और pKa, द बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम. जो दोनों बराबर होगा तो pH pKa के बराबर होगा, उस समय बफर सबसे अच्छा बफर का काम करेगा. फिर So हाँ नहीं what do you बोलते हो. mean by buffer? Buffer is a mixture of a weak acid and its salt. I mean these two. अरे this is the buffer in human blood. ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास रहता है. ब्लड को कहां कहां जाना रहता है? ह्यूमन ब्लड को सारा ऑर्गन में जाना है. स्टोमक में HCl एसिडिक मीडियम जगह रखा है. हर विशेष ऑर्गन का पीएच अलग अलग होगा. सेम ब्लड हर ऑर्गन में जाता है, लिवर, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन. तो बफर क्या करता है? पीएच कंट्रोल करता है. ब्लड के अंदर में, ह्यूमन ब्लड के अंदर में बफर किसका होता है? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का होता है. यस और नो? फिर इसका होता है, जो भी होता है. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ, sir. हाँ सर. Can I say a buffer is going to resist the change in pH, and जब भी तुम इसमें OH माइनस डालते हो, ये ग्राफ ऐसा होगा. ये ग्राफ धीरे धीरे, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि द चेंज इन पीएच इज वेरी नेग्लिजिबल, और ये एकदम फ्लैट हो जाएगा. ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. जो सबसे फ्लैट होगा ना, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा. Sir, pKa1 का value. यस. ये pKa1 का वैल्यू पे फ्लैट क्यों होता है? ये pKa1 का वैल्यू पे फ्लैट होता है क्योंकि यहाँ पर Best buffer होता बेस्ट बफर होता है. यस. इसके नीचे भी ये थोड़ा स्टीप होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टीप होगा. यस और नो? अब ये स्टीप हुआ, स्टीप होते हुए फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, और ये जब वापस बिल्कुल pKa2 के close. pK2 के इक्वल होगा, then this will be the best buffer between 3 and 2. Why do you call it a best buffer? Because on adding OH minus or removing OH minus, the change in pH is very very small. ये जो कर्व है ना, ये सबसे फ्लैट कब होगा? जब pK1 होगा और जब pK2 होगा. फिर खाना नहीं बोलते हो. हाँ सर. और ये सबसे स्टीप कब होगा? ये सबसे स्टीप होगा, ये सबसे स्टीप होगा जब दिस विल बी लाइक pKa1 प्लस Plus pKa2. pKa2 by 2. ये कब होगा मालूम है? ये तब होगा जब 2 और 3, जब 1 और 3 बराबर होगा.
जब 1 और 3 बराबर होगा, जब 1 और 3 बराबर होगा, एक क्वेश्चन आता है, जेई में क्वेश्चन आता है, फाइंड द पीएच ऑफ, जेई में क्वेश्चन आता है, फाइंड द पीएच ऑफ 0.2 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट, 0.3 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट, सर ये कब 0.8, सर ये कब होगा जब 1 और 3 बराबर होगा या 1 और 2 बराबर होगा? 1 और 3, 1 और 3। मैं बताता हूं क्यों। जब एक क्वेश्चन आता है फाइंड पीएच ऑफ 0.2 मोलर, 0.4 मोलर, 0.8 मोलर, व्हाटएवर सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे ये तो क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन है ना, ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया कि तीनों रहता है, 1, 2 और 3 रहता है, 1 का है, 3 का है। मैं तुमको क्या बोला कि pH is equal to 0, 1 is much more than 2, pH 0 to pK 1 is more than 2, pH is equal to pK 1 is equal to 2, pH is equal to pK 2 is equal to 3, pH less than pK 2 will be more than 3, pH more than pK 3 will be more than 2। और एक क्वेश्चन बोला तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते सब रहता है, भी बोला तो बच्चे लोग हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा भाई? ये तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस दो में वीक एसिड है। मेरे को ना दो फॉर्मूला पता है, मैं बताऊं, मेरे को दो फॉर्मूला पता है। मेरे को एक 7 फॉर्मूला प्लस पता है, हाफ पीके वाला। मेरे को एक फॉर्मूला पता है, pH इज इक्वल टू pK1 प्लस लॉग ऑफ 2/1, और मेरे को एक फॉर्मूला पता है pH इज इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ 3/2। मेरे को दो फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? बताओ, ये दो हेंडरसन इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर। पर तुम मेरे को कम से कम 1 तो दो, तुम मेरे को 3 तो दो, तुम तो मेरे को खाली 2 दिए हो। इस क्वेश्चन में क्या है? 1 दिया हुआ है, 0.2 मोलर के साथ में अगर थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड देता तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, 0.2 के साथ में थोड़ा सा कार्बोनेट देता तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, पर खाली भाई कार्बोनेट दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? ये समझना पड़ेगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन के अंदर में पहला बात तो इस स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। इस स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। ये एम्फीप्रोटिक क्यों है? क्योंकि ये H+ लेके पीछे भी जा सकता है, H+ छोड़ के आगे भी जा सकता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? एम्फीबिया जैसा, एम्फीबिया पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। एम्फी मीन्स एम्बिगुअस। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक मतलब इट कैन लूज H+ और इट कैन टेक H+, यस और नो? यस सर। I told you when you dissolve carbon dioxide in water, you get carbonic acid, bicarbonate, carbonate, all of them. इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अरे ये ज्यादा होगा, ये बहुत कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत कम होगा, किसी पीएच पे ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, किसी पीएच पे ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। मैं रेंज बता दिया हूँ, और ये सब मैथमेटिकल है। पर कहाँ है 1, कहाँ है 3, कहाँ है? क्वेश्चन तो है 0.2 मोलर, 0.4 मोलर, 0.8 मोलर का बताओ। और इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है pH इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2/2। जो भी आयनिक में एम्फीप्रोटिक का प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको ये बात पता है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। तुम 1 और 3 का बात ही नहीं कर रहे हो। तुम थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड देते तो हम ये फॉर्मूला लगाते, थोड़ा सा कार्बोनेट देते तो हम ये फॉर्मूला लगाते, पर तुम मेरे को कार्बोनिक एसिड दिए ही नहीं हो, तुम मेरे को कार्बोनेट दिए ही नहीं हो, तुम मेरे को खाली बाइकार्बोनेट दिए हो।
इसका मतलब क्या है मालूम है? तुम इस पॉइंट का ही बात कर रहे हो। इस पॉइंट पे 2 मैक्सिमम है और 1 और 3 नेग्लिजिबल है और बराबर है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं एक चीज लिखता हूं। अब मैं एक चीज लिखता हूं, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरे को एक प्रॉब्लम ऐसा दिया है जहां पे 1 और 3 का बात ही नहीं किया है और मैं ये दोनों इक्वेशन लगा ही नहीं सकता हूं, so this is when 2 is maximum, when 2 is maximum and 1 and 3 are equally negligible. अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। What will be the product of K1 into K2? The product of K1 into K2 would be 2 will cancel out. 1 and 3 will also cancel. 1 and 3 will also cancel out. In this situation, 1 and 3 will also cancel out because 1 and 3 दिया ही नहीं है. So 1 and 3 are equal and negligible. Take your time and tell me. Have they given you any amount of carbonic acid here? कार्बोनिक एसिड देता तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता, कार्बोनेट देता तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता, थोड़ा भी देता तो मैं फॉर्मूला लगा देता, दिए ही नहीं है। बोलता है 0.2 मोलर बाई कार्बोनेट के फॉर्म पीएच निकालो। इसका मतलब है मेरे को 1 और 3 को नेग्लिजिबल लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। ये 2 तो कटता ही है, 1 3 भी काटना पड़ेगा। बचेगा क्या? K1 into K2 is equal to h square. Yes or no? हाँ सर, माइनस लॉग लेके फॉर्मूला आ जाएगा। Naturally, अगर एक प्रॉब्लम देता कि 0.2 ये है और 0.05 कार्बोनिक एसिड है तो मैं एक बफर का फॉर्मूला लगाता। बोलता 0.2 ये है और 0.005 कार्बोनेट है तो मैं एक और फॉर्मूला लगाता। जब एंटीबायोटिक स्पीशीज का ही खाली कंसंट्रेशन देता है तो इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट को मेरे को ऑलमोस्ट इक्वल लेना है, नेग्लिजिबल लेना है। एंड दिस इज हाउ, विदाउट टेकिंग टू मेनी assumptions which you will find in textbooks in a very absurd manner, root K1 K2 is equal to H plus. You take minus log on both sides and you get minus log of H plus as minus half log of K1 minus half log of K2. And this is the most straightforward method of arriving at the solution to a problem of this kind. बच्चे लोग खाना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। इसी को अमीनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। इसी को अमीनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। हाँ सर। इसको जल्दी से कॉपी करो, अब मैं अमीनो एसिड बनाऊंगा। इसको जल्दी से कॉपी करो, अब मैं अमीनो एसिड बनाऊंगा। कॉपी हो जाएगा तो मेरे को बताना। Can I remove this clutter? अब मैं यही 1 2 लिखूंगा या मैं वही 1 2 3 लिखूंगा? मैं यही 1 2 3 लिखूंगा और मैं कार्बोनिक एसिड की जगह मैं बाई कार्बोनेट की जगह ब्यूटेराइन बनाऊंगा। So now let me do this with CH3CH NH3 plus COOH forming H plus and CH3CH NH3 plus COO minus, which is form 2 and form 1, and then CH3CH NH3 plus and COO minus
giving me H plus and CH3CH, NH2 and CO minus. So should we form 3 and form 2? Can I rub it off? Yes, sir. Now, with the same approach, what am I proposing is at pH which is very small, 1 is more than 2, at pH is equal to pK1, 1 and 2 are equal, at pH is equal to pK2, 2 and 3 are equal. And what is PI? What is isoelectronic point? Isoelectronic point for an amino acid is supposed to be the form where it moves neither to cathode nor anode. जब अमाइनो एसिड कैथोड पर भी नहीं जाता है, एनोड पर भी नहीं जाता है. अब वो कैथोड पर भी नहीं जाएगा, एनोड पर भी कब नहीं जाएगा? जब इसका ये टू फॉर्म मैक्सिमम रहेगा, तभी तो वो कैथोड एनोड पर नहीं जाएगा. ये कैथोड पर भी नहीं जाएगा, एनोड पर भी नहीं जाएगा. और टू मैक्सिमम कब होगा? टू मैक्सिमम तभी होगा if 1 and 3 are equal and negligible. ये जो pH है ना, ये जो pH है ना, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. अगर pH इस वैल्यू से, अगर pH इस वैल्यू से कम होगा तो 1 बढ़ेगा, अगर pH इस वैल्यू से ज्यादा होगा तो 3 बढ़ेगा. कुछ कटैन बन जाएगा, कुछ एनायन बन जाएगा, कुछ कैथोड पे जाएगा, कुछ एनोड पे जाएगा. ये 2.5 और 9.5 लिया था ना. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. सर आइसो इलेक्ट्रिक होता है ना. आइसो इलेक्ट्रिक बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलो, एक ही बात. पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता क्या है? वो pH where the concentration of the zwitterion is maximum, वो pH when the amino acid moves neither to the cathode nor to the anode. अरे हाँ ना बोलते रहो. हाँ सर. मैं ना एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का एग्जांपल ले लिया बिकॉज क्लास 11 में ये तुम लोग को पढ़ाया जाता है. हाँ सर, ये सब तो हुआ होगा. पर ये ना बहुत सारा एजम्पशन लेकर के और किताब के अंदर में ना बहुत डिफिकल्ट तरीका से बताया जाता है. कितना सिंपल तरीका से समझा जा सकता है? तुम बताओ, तुमको बोल रहा है खाली 2 है, 1 नहीं है, 3 नहीं है. ऐसा क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सब होगा. अरे हाँ ना बोलो. हाँ सर. या तभी होगा जब एक पर्टिकुलर पीएच पर 1 और 3 को हम लोग नेग्लिजिबल ले लेंगे. अरे हाँ ना बोलो. हाँ सर. ज्यूटेराना कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने के लिए, ज्यूटेराना कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने के लिए it has to be a fixed pH value because the K1 K2 value is a constant value, and this is when the form 1 and 3 are negligible and equal, and 2 is the predominant form. तभी तो कैथोड एनोड दोनों पे नहीं जाएगा because only in the form 2 it's eventually effectively neutral. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. तो वही एम्फीप्रोटिक स्पीसीज में होता है, वही ज्यूटेरान में होता है. At pH is equal to Pi, which is pK1 plus pK2 by 2. अलानिन में अगर ये pK1 का वैल्यू है,
ये pK2 का वैल्यू है, तो pH6 होने से 2 is maximum, 1 and 3 are negligible, maximum molecules will be in form 2 and they'll move neither to cathode nor to anode. आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. You're all happy with this? Yes, Yes. sir. Let me very quickly take a case of an acidic and basic amino acid. This was for a neutral amino acid. I'll quickly take up a case of acidic and basic amino acid. I think यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. हाँ सर. CH2 ये मैं एसिडिक बोलूं कि बेसिक बोलूं? आई होप ये सारा बोर्ड पे दिख रहा है. Basic. बेसिक. बेसिक सर. बिकॉज Basic. अमोनिया NH2 ग्रुप ज्यादा है COH. इसका नाम है लाइसीन. इट्स अ बेसिक अमाइनो एसिड. ठीक है. अब मैं ऐसे लिखूं K1 जहां पर ये प्लस छोड़ेगा से और इट वुड बी लाइक NH3 plus CH2 whole 4 COO minus, oh god, and NH3 plus, and then there will be like H plus and जो COH के पास में है उससे पहले मैं निकालूंगा H plus और then another H plus law, and this will be like NH2 CH2 whole 4 CH COO minus. कोई भी ऐसा एक फॉर्म है कि जिसमें चार्ज नहीं है? कोई भी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें चार्ज नहीं है? नहीं सर. जी ड्यूटरान दिख रहा है मेरे को. तो K1 है तो ये K2 और ये K3 है. ये 1 है और ये 2 है तो ये 3 और 4 है. Can I call it monoanic? Monoanic, monocationic, zwitterion, dipolar, dicationic. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. तो यहाँ पर पीआई कब होगा? When 3 is maximum and for 3 to be maximum उसके पहले और उसके बाद वाले एक मिनिमम होना चाहिए. So when 2 and 4 are equal and negligible, yes or no? Yes sir. তাহলে এখানে কি হবে? এখানে আমাকে K2 আর K3 নিতে হবে. এবার K2 into K3 একটু দেখে নিও would be equal to ये 3 कैंसिल हो गई और 2 और 4 को इक्वल लेना तो ये कैंसिल होगा. हाँ और फॉर इक्वल और नेग्लिजिबल है वो भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. हाँ सर. And this will give me a result like Pi is when pH is equal to pKa2 plus pKa3 by 2
is maintained. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. You all happy with this? Yes, sir. You are happy, I'm happy sharing this, very basic fundamental knowledge with you. किताब में ना 12 बजा देता है, इतना सारा assumption लेता है ना. अरे भाई 1 2 3 4 सभी रहता है. ये जानते हो कैसा है? हालांकि एग्जैक्टली चार्जेस तो ऐसा नहीं है, पर फॉस्फोरिक एसिड में K1 K2 K3 रहता है. तो ये वो कंडीशन है when you are given find the pH of, this is when you are given a problem like find the pH of Na2HPO4. Na2HPO4 is like HPO4 minus minus, which is like the form. K2 plus K3 by 2. Yes. A form like NH2PO4 would have been like pKa1 plus pK2 by 2. Yes or no? Yes, sir. चलो बच्चे लोग, मजा आएगा. क्वेश्चन तो बनाएंगे हम लोग आईडी का. अभी हम लोग if you are happy with this, just copy it down. One last case which is about, ये बेसिक अमाइनो एसिड लिख देता हूं मैं यहाँ पे. It's a basic amino acid because the basic group is more than the acidic group. Lysine. ये नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर सब किताब में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा. One last case which will be about an acidic amino acid. Can I wrap it off? Yes, sir. Sir, please wait a while. Yes, sir. अच्छा, I'll wait for a minute. I'll wait for a minute. I certainly want to wait, and I would want to go by you. You people have been so nice and so amazing. Attending a class at 11:30 winter night. Please let me know when I can wrap it off. Yes, sir. One It's last done. case. बेटा तू हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर. So this last case would be like a routine case where yet again I'll call it acidic amino acid because the COH group would outnumber the NH2 group. Acidic amino acid. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. तो बेसिकली यही है, यही CH है, यही COH है, यही NH3 प्लस है, और एक कार्बन और एक COOH यहाँ पर ज्यादा है. नाम है एस्पार्टिक एसिड. तुमको इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है. You just need to know it as an acidic amino acid because the number of COH groups is more than NH3 plus. You understand? I need to start with a form which is predominant at say pH is equal to 0. जहां पर अगर इससे H plus नहीं निकल जाए तो H plus लेके रखेगा. Yes or no? हाँ सर. यहां पर भी वही बात है. मैं पहले ना उससे H plus निकालूंगा जो कि ये NH3 प्लस के पास में है, -8 है. उसके बाद उससे H plus निकालूंगा जो कि एसिड है, और उसके बाद उससे H plus निकालूंगा जो NH3 प्लस है. Let me call this form 1, form 2,
form 3, form 4, and let me also call this monocationic, dianionic, monoanionic, because के ऊपर में एक net -1 चार्ज है ना, 2 - 1 प्लस है, and now this is the Zwitter ion, है ना, dipolar ion. It's formed. So this is going to be a general formula. pH is equal to Pi, isoelectronic point, when the concentration of Zwitter ion is maximum, because 2 is the form which is effectively neutral. And for 2 to be maximum, you let again want 1 and 3 to be equal and negligible. Give it a try. This would again result in K1 into K2 is equal to 2H plus by 1 into H plus. And when I'm talking about K2, it's naturally C and H plus. 2 will cancel out. So 1 and 3, because I have presumed them to be equal, which is H plus square. This would mean H plus is equal to root over of K1 into K2, and would give you pH is equal to pKa1 plus pKa2 by 2. तो चलो हाँ ना बोलो. हाँ सर हाँ हाँ सर सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो होता है जहां पे तुम ये मानते हो कि वो कैथोड एनोड दोनों पे नहीं जाएगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से जब पीएच कम होता है तो वो कैटायनिक फॉर्म में रहता है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से जब पीएच ज्यादा होता है तो वो एनायनिक फॉर्म में रहता है. यस और नो? यस सर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे ज्विटर आयन मैक्सिमम होता है, डाइपोलर आयन मैक्सिमम होता है. कैन आई से एट पीएच लेस देन PIN और PI, मैं PI बोल रहा हूं इसको, the predominant form is cationic form, and at pH more than Pi, the predominant form is the anionic form. हाँ सर I'll quickly tell you why do I so desperately look for isoelectronic point in all the amino acids. At Pi, this is maximum. At pH less than Pi, this is more. At pH more than Pi, this is more. Yes or no? यस सर Please tell me, when can I remove this clutter? Yes, sir. Can you rub it off? सर एक सेकंड Give me a minute. Can you all hear me loud and clear? बच्चे सब हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर Are you all done copying this down? यस सर। हाँ सर यस सर चलो, ये भी समझ में आ रहा है कि अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से कम होगा तो 1 2 से ज्यादा होगा, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से ज्यादा होगा तो 3 2 से 1 से ज्यादा होगा. मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे 2 मैक्सिमम, उससे कम पीएच पर 1 ज्यादा, और उससे ज्यादा पीएच पर 3 ज्यादा. अरे हाँ ना Yes, बोलो. sir.
हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑल्दो दिस इज नॉट द रियल थिंग, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट्स डन, बट इट्स अ बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ how it's eventually going to find an application in the real world. नेचर में तुमको मोनोसैकेराइड्स नहीं मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स मिलेगा। नेचर में तुमको अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा, तुमको प्रोटीन्स मिलेगा। प्रोटीन को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, पॉलीपेप्टाइड बनाओगे, अमीनो एसिड्स मिलेगा। मान लो एक सिस्टम है जिसमें 3 अमीनो एसिड है। देयर इज अमीनो एसिड 1, देयर इज अमीनो एसिड 2 एंड देयर इज अमीनो एसिड 3। एकदम मस्त पानी में पूरा सोल्यूबल है, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और पीआई वैल्यू इसका है 3, इसका है 6, इसका है 9। ठीक है? हाँ सर। हाँ अब यहां लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो एक बैटरी से। कहानी जैसा सुन लो, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बेसिक ब्लूप्रिंट है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैटायनिक फॉर्म यहां पर आएगा, एनायनिक फॉर्म यहां पर आएगा। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ। अब मैं अगर इसका पीएच 6 रखता हूं, अगर मैं इसका पीएच 6 रखता हूं तो इसका पीआई है अमीनो एसिड 2 जो होगा, इट वुड मूव neither to cathode nor anode, because all molecules, almost all molecules will be in the Zwitterand form. अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ सर। Yes, sir. अमीनो एसिड 1 जिसका pH 3 है, उसके लिए एक्सटर्नल pH is like this condition. Yes, sir. So this will go to the anode. And amino acid 2, 3 जिसका pH 9 है और pH 6 would be like this condition. यस सर। Yes, sir. And this will go to the cathode. So I've given you, a general rough kind of situation, and I think you're understanding me. Yes, sir. So with this, we would want to conclude for the time being. I hope you all have been understanding me. If there is a doubt, I'll address it when I meet you next. Stay happy, stay healthy. Before I let you go, I think this is looking pretty simple. अरे हाँ ना बोलो। हाँ Yes. सर। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू सो मच। सर अमीनो एसिड का याद नहीं करना होगा। इस साल एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिंबल पूछ रहा था। कर लेना याद, जितना ज्यादा याद कर सकते हो उतना अच्छा है। एनसीईआरटी में जितना लिखा है सभी याद रखना पड़ेगा, ठीक है? When I see you next, I will tell you a few ways, a few tricks, how to recall the symbol of amino acids. Trust me, I'll help you there as well. But this, I repeat, is going to be a bigger understanding when it comes to the chemistry of amino acids.
ठीक है बच्चे लोग, ठीक है सर। मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, यू पीपल, बाय, गुड नाइट, Thank you. Thank you, गुड sir. नाइट सर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।